most thing of climatology. If you are comfortable with this, you are done maximum. I will say 90% of your study of climate is done. Astronomical units written here, you don't need to take into consideration. What I'm overwriting, just try and concentrate. So this is my figure, which is showing this as a sun. It's just for the reference sake. So we have labeled it and we have just left it. And now I want to pick up our planet Earth. So planet Earth's 4 position round sun, because I want to highlight few of the pointers. So I'm just overwriting on this diagram. You first try and understand. You must be aware of it. It's something very basic. If you are aware of it, revise it. Otherwise, simply listen to what I'm saying. What are these 4 positions around sun that we have taken into account? It is a revolution of planet Earth. Planet Earth revolves around sun in elliptical orbit as it is visible here, and has axial inclination, that is 23.5 degrees from axial plane. So I have got North Pole here, and I'm quickly labeling North Pole in all my figures. And I have got South Pole at the opposite end by default. And this is what I have marked as geographical equator, that is 0 degrees, and I have labeled it here. Now, I want all of you to very carefully and clearly try and understand. Understand what? Understand that these are the pointers that have been selected with certain rationality. How? I begin from December, January, February, March, April, May, June, July, August, September. So we have taken 365 days and we have taken the appropriating 4 positions of Earth around sun as it revolves around sun in the elliptical path. Now, this is 21st December, this is 21st March, this is 21st June, and this is 23rd September. Now, what you have to understand very carefully is that even with this crudest possible diagram that we can construct, June 21st, northern hemisphere is inclined towards sun. And December 21st, southern hemisphere is inclined towards sun. If you have agreed to it, give me go ahead. You have. That means June 21st, high sun, apparent, sun don't move, apparent position of sun is in northern hemisphere. And in 21st December, apparent position of sun is towards south. So what you have to understand, that these 2 positions are showing extremes. We call them solstice. This is a summer solstice. And this is winter solstice. Now, how do you identify solstice positions? Solstice positions can be identified when one hemisphere is inclined towards sun. If northern hemisphere is inclined towards sun, will it be receiving more incoming solar radiation? Yes. Will it be experiencing higher temperature? Yes. Higher temperature season is called summers. If I have to add March 21st, which is called equinox, and which equinox? It is spring equinox. So I just write it here. And 23rd September is fall. You can call it autumn equinox. तो आपको बेसिकली समझना क्या है, बहुत ध्यान से सुनना. Between 21st March to 23rd September, apparent position of sun remains north of geographical equator. I repeat, between 15th March to 23rd September, March to September, अपनी knowledge apply करो, your experience that you have attained since your childhood. मार्च से समर शुरू हो जाता है, सितंबर तक रहता है, हैंड रेस कर दो. How do we define summers? Summers are the season where we experience lengthier duration of day, the season when we experience
लेंथियर ड्यूरेशन, मोर इनकमिंग सोलर रेडिएशन, सो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर तो हाई होगा। तो मार्च से सितंबर के सीजन को कौन सा सीजन कहा जाता है? इट इज कॉल्ड हाई सन सीजन। Mind it, high sun season for which hemisphere? Northern hemisphere. And September से मार्च को क्या कहा जाएगा? Low sun season. Low sun season for which hemisphere? Northern hemisphere. 6th class की NCERT का कंटेंट है, there is a reversal of seasons between the hemisphere. अब इसको कैसे लॉजिकली पकड़े, ऐसे सोचते हैं, अगर नदर्न हेमिस्फेयर ने ज्यादा शेयर ऑफ इंसोलेशन ले रखा है बिटवीन मार्च टू सितंबर एंड अमाउंट ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन इज नियर कांस्टेंट, तो सदर्न हेमिस्फेयर को तो कम मिलेगा ही ना। नदर्न हेमिस्फेयर इज इंसोलेशन सरप्लस, thus is experiencing high sun season. Why it is insolation surplus? It is insolation surplus because it is experiencing northern hemisphere is inclined towards sun, have received more direct sun rays. Duration of day, I am writing daytime, is lengthier. कंबाइन कर लो, नदर्न हेमिस्फेयर में डेफिनेटली इंसोलेशन ज्यादा कंसंट्रेट रहेगा। गो अहेड दो भाई। नदर्न हेमिस्फेयर में तो इंसोलेशन ज्यादा ही रहेगा। तो स्प्रिंग इक्विनॉक्स से लेकर ऑटम इक्विनॉक्स, मार्च टू सितंबर, नदर्न हेमिस्फेयर रिमेन्स इंसोलेशन सरप्लस। सितंबर टू मार्च, southern hemisphere becomes insolation surplus. No wonders when India experiences summers, Australia experiences winters. Are you aware of it? There is always a reversal of seasons between the hemispheres. मुझे confident go ahead चाहिए। कुछ डेज का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा बिकॉज हम IMD का क्लासिफिकेशन, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का क्लासिफिकेशन लेकर पढ़ते हैं इंडियन कंटेक्स्ट में। वी कैन नॉट मैनिपुलेट इट अदरवाइज, राइट? सो व्हाट इज द चेंज दैट वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट? द चेंज दैट वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट इज दिस, एंड बी वेरी कॉशियस। 21st मार्च, 21st जून, 23rd सितंबर, ऐसा नहीं करके हम तो 15th ऑफ ईच मंथ ले रहे हैं। यस, सो सोचो, लिस्ट को देखो अपनी। 15th मार्च टू 15th जून कौन सा सीजन है? समर्स। 15th जून टू 15th सितंबर कौन सा सीजन है? एडवांसिंग मॉनसून। हो गए ना दोनों हाई सन सीजन? कॉन्फिडेंट गो अहेड। और बिल्कुल वैसे 15th सितंबर टू 15th दिसंबर हुआ रिट्रीटिंग मॉनसूनल सीजन। आई राइट इट हियर and I'm writing it so that it becomes easier for you to handle. So बस 15 करना है, 21st नहीं रहेगा। जून से सितंबर में कौन सा सीजन चलेगा आपका? मॉनसून एडवांसिंग। मार्च से जून में कौन सा सीजन चलेगा? समर्स। इंडियन सीजन की बात करें। सितंबर से दिसंबर कौन सा सीजन चलेगा? रिट्रीटिंग मॉनसून। हो गया टेबल और डायग्राम का ओवरलैप? कॉन्फिडेंट गो अहेड देंगे बच्चों। एंड देन हेयर इट इज सम विंटर्स। So I need to understand that IMD has basically sub-classified the annual season cycle into 4. नहीं तो technically in the study of climate we believe into two types of climate, two types of weather, high sun, low sun, दो सीजन करते हैं। IMD कहता है ना हाई सन लो सन से नहीं चलेगा, हाई सन को सब डिवाइड करो एज ड्राई समर्स, एडवांसिंग मॉनसून, और लो सन को भी डिवाइड करो as retreating monsoon and dry winters. I need a confident go ahead to proceed.
सिर्फ एक दो हैंड रेस से काम नहीं चलेगा, एवरी स्टूडेंट शुड रिस्पॉन्ड। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्लाइमेट में कॉम्प्लिकेशंस इसलिए लगती हैं बिकॉज एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड, and once you have developed the understanding of that interrelation, take my word, there is nothing much easier than climatology. यहाँ तो नाम भी याद नहीं करने पड़ते, फिजियोग्राफी में तो आपको नाम याद करने पड़ते हैं, दिस माउंटेन, दिस प्लेट्यू, दिस एक्सेट्रा, दैट यू डोंट हैव टू डू इट। कंफर्टेबल? परफेक्ट। अब चल रहे हैं हम अपना बेसिक स्टडी ऑफ क्लाइमेट and then we'll come back here. So I go back to my map, which I'll be utilizing as our base map to study. We want to take the division of these season cycle further. So what I do is, I have clarified the board and now carefully understand and understand it cautiously. To 15th March. Apparent position of sun is in southern hemisphere. India thus is experiencing low sun season. Low sun season equals low temperature. Star mark. Atmospheric temperature is amount of heat present in atmosphere. अभी थोड़ी देर में आपको एटमॉस्फेयर के बारे में बता देंगे, पहले अभी ऐसे ले लेते हैं। Principal source of which is outgoing long wave terrestrial radiation. Outgoing long wave terrestrial radiation. Low sun season relates to low temperature. Thus, low sun season will be high pressure. High pressure. That is, India will be having presence of subtropical high. This is the technical name of high pressure. I'll just make you understand it. Air pressure is the weight that air column exerts on the Earth's surface. So every subsiding convection tends to generate high pressure on ground, and subsiding convection will be of cold air. चलो भाई जल्दी से go ahead दे दो. If the air temperature will be less, will it not be that the air pressure will be high? Lower the temperature, colder the air will be subsiding. Subsiding will be exerting more weight on the ground. More weight on the ground automatically will create high pressure. So टिक करना शुरू कर रहे हैं. आप लिखने के बाद हमें go ahead देंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे. Dry winters is characterized with low temperature, high pressure. अब इसे भी ये दो चीजें पढ़ी हैं.
In between definition लिख दिया, air temperature is amount of heat present in atmosphere. डेविएशन हम फटाफट ले सकते हैं, हम अभी लेते हैं। ये हमारा सीजन नंबर 1 है। हमने आपको बताया था हम आपको पूरी क्लाइमेटोलॉजी इंडियन क्लाइमेट के बेस पर पढ़ाएंगे, कुछ कुछ पॉइंटर्स रह जाएंगे, उसको हम अलग से हैंडल करेंगे। आई एम वेटिंग फॉर योर गो अहेड। What happened? I'm not getting go ahead. It is because India is high pressure, my map. It is because India is high pressure during this season and neighboring water are low pressure. High pressure, low pressure. Why water will give you low pressure when land is high pressure? अभी बता रहे हैं थोड़ी देर में. India experiences, you know the expression, offshore winds. These offshore winds causes dry conditions. Offshore winds मतलब wind moving from land to water. So land to water winds तो definitely dry conditions develop करेंगी. These winds are called northeastern trade winds. Dry winters are low temperature, high pressure, offshore, thus dry. Okay. At this point itself, let me just add this expression because I think it is important for all of us to be aware of it. That water is number one, translucent. Number two is mobile. लिख लो हमारे साथ अभी समझा रहे हैं. And number three have high specific heat. Water always maintains its temperature. And in comparison to it, land always shows extreme. ये लिख लिया है तो मैं जरा पहले go ahead. भाई इंडियन लैंड मास इज हाई प्रेशर, चलो समझ में आ गया, पर फिर अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन में लो प्रेशर क्यों होगा? क्योंकि जब लैंड एक्सट्रीमली हॉट है तो नेबरिंग वाटर हमेशा कोल्ड होता है. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वाटर इज ट्रांसल्यूसेंट. व्हाट डज दैट मीन? ऑल ऑफ यू बी हियर, all of you be here. The hand where I'm wearing watch is land and the another hand palm of mine is water. Both of us are receiving incoming solar radiation. Land heated up, done, task over. Water, sun rays will penetrate to certain depth. In spite of same amount of insolation, will it not be that land will be heated much more than water because water is translucent? Number two, water is mobile. Land and water are experiencing same amount of incoming solar radiation. Land heated, done, hata do. Water, sun rays are heating me and I'm moving. Sun rays are heating me and I'm moving. So automatically there will be horizontal mixing. So I'll be maintaining my temperature. I think this is also done. और तीसरी चीज लिखी है आपने, water has high specific heat. हाई स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या होता है? हाई स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है इफ आई हैव टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर टू द ट्यून ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस,
I need more heat for water than land. इसलिए वाटर हमेशा अपना टेम्परेचर मेंटेन करता है, लैंड ऑलवेज शोज एक्सट्रीम। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो जरा हमें गो अहेड दीजिए। And in this continuity, let me just quickly add one important factor. ट्रांसल्यूसेंट मतलब जहां पर सनरेज पेनिट्रेट कर पाए ना, लैंड पर तो सरफेस को हीट कर देगा, काम खत्म। वाटर में तो सनरेज पेनिट्रेट कर सकता है ना, हम इसको बायो इकोलॉजी में पढ़ेंगे, फोटिक जोन बोलते हैं, सनलिट जोन। कितने डेप्थ तक सनलिट जोन हो सकता है? 1200 मीटर। तो अगर सनरेज 1200 मीटर तक एंटर करेगा तो डेफिनेटली वाटर का टेम्परेचर नेबरिंग लैंड के मुकाबले में तो कम ही होगा ना। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना। आई एम आस्किंग यू टू अंडरस्टैंड द थिंग्स विद द डिटेल्स। आई एम क्विकली रिमूविंग ऑल दीज पॉइंटर्स फ्रॉम हियर। अब बहुत ध्यान से नोटिस करेंगे और समझेंगे आगे। जो जो चीजें हम लिखते जा रहे हैं, आप चाहो तो हमारे साथ साथ लिख सकते हो, ताकि इवेंचुअली हम अपना समय समझने में लगाएं। ठीक है, अब थोड़ा सा टेक्निकल क्लाइमेटोलॉजी का फैक्टर ले रहे हैं। दिस इज माय जियोइड, this is my equator, this is my 30 degrees, 60 degrees, 90 degrees, 30 degrees, 60 degrees, 90 degrees. Incoming solar radiation is more direct in lower latitude. Incoming solar radiation is immensely slanting in the higher latitude. That is the reason when I talk about 60 to 90 degrees north as frigid zone, they are coldest zone. If I label 30 to 60 degrees north and south as temperate zone, they are moderate temperature zone. And if I shade 30 degrees north to 30 degrees south, they are torrid और ट्रॉपिकल जोन, दोनों टर्म एप्लीकेबल है। टॉरिड और ट्रॉपिकल जोन, दे आर वार्मेस्ट। And what you have just taken into consideration are called thermal zones, which says air temperature decreases with increase in sign of latitude. लिख लेंगे तो जरा गो अहेड करके बताइए। Low latitude will always receive direct sun rays. So direct sun rays receive करेगा तो हमेशा ही टेम्परेचर हाई होगा। मिड लैटिट्यूड में मॉडरेट रहेगा, हाई लैटिट्यूड में स्लांटिंग। And why that is the case, that you can write here, slanting sun rays travels more and diffuses more. Direct sun rays travels less and diffuses less. लिख लेंगे तो जल्दी से गो अहेड देंगे क्लास।
अब इमेजिन करो, आप सब लोग इमेजिन करो, एंड आई इंसिस्ट कि आप सब हमें रिस्पॉन्स करेंगे। इमेजिन करो कि हम सब खड़े हुए हैं किसी एक डार्क रूम में, और इस डार्क रूम में हमने आपके हाथ में, आप सबके हाथ में एक एक टॉर्च पकड़ा दिया। आप सबने उस टॉर्च को अपने पाम पर रखा अपसाइड डाउन, और पाम पर रखने के बाद आपने उसको लिट कर दिया, आपने उसको जला दिया। जैसे जैसे आप टॉर्च को लिफ्ट अप करते जाओगे, विल दी सर्कमफ्रेंस ऑफ लाइट विल स्टार्ट एनलार्जिंग। हैंड रेज कर दो, है ना। तो जैसे जैसे आपने उसको, आपने अगर उसको ऐसे डायरेक्ट रखा है, अपसाइड डाउन रखा है, और लिफ्ट करते जाओगे तो जो सन, जो उसका रे है, जो उसका स्प्रेडिंग एरिया है, उसका सर्कमफ्रेंस बढ़ता चला जाएगा। और जैसे आपने उसको टिल्ट किया, वो एक बड़े लंबे चौड़े पार्ट ऑफ रूम को एनलाइटन करेगा। हैंड रेज करो। Distance between planet Earth and Sun is some 149 million kilometers. तो डिस्टेंस फैक्टर, ऑफ कोर्स वी हैव इलिप्टिकल पाथ जहां पेरीहीलियन एंड एपीहीलियन होता है, बाद में बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन अर्थ और प्लैनेट, अर्थ एंड सन के बीच का डिस्टेंस जो है वो नियर कांस्टेंट है। फिर भी अर्थ सरफेस रिसीव्स वेरिएबल अमाउंट ऑफ इंसोलेशन। व्हाई दैट इज द केस? बिकॉज ऑफ द एंगल ऑफ सन रेज। जो डायरेक्ट सन रेज होती है, खुद से देखो आपका रेड डायरेक्ट एरो कितना छोटा सा बना हुआ है। अगर हम डायग्राम को थोड़ा सा ऐसे मैनिपुलेट करके बना दे, मेरे ख्याल से और विजुअलाइजेशन हो जाएगी। ये मेरा डेस्टिनेशन है और ये मेरा सोर्स है। अगर सोर्स से डायरेक्ट सन रे आ रही है और सोर्स से स्लांटिंग सन रे आ रही है, दिखाई दे गया ना कि डायरेक्ट सन रेज ट्रैवलिंग लेस, हैंड रेज। स्लांटिंग सन रेज ट्रैवल्स मोर। और हमारा एग्जांपल ऑफ टॉर्च ले लो, स्लांटिंग सन रेज डिफ्यूजेस मोर, तो ऑटोमेटिकली उसमें तो इंसोलेशन कम होगा। टेम्परेचर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन साइन ऑफ लैटिट्यूड। बताओ समझ में आया कि नहीं? आ गया। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जब आप टेम्परेचर की बात करते हो विद एंगल ऑफ सन रेज, आप एक पॉइंटर को जगह नहीं दे रहे हो। किस पॉइंटर को जगह नहीं दे रहे हो? Thermal zone is not considering unequal land and water distribution. Planet Earth में land water distribution is unequal. We are having diversity of relief. That is the reason there is the prevalence of temperature anomaly. बच्चों थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कंसेप्ट है, ध्यान से सुन लेना। टेम्परेचर एनोमली, एनोमली का मतलब क्या होता है? डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल। तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल को जज करने के लिए लैटिट्यूड को 3 के बजाय 2 में डिवाइड कर देते हैं। सो आई एम क्रिएटिंग अ टेबल। पहले आप समझ जाओ टेबल का जिस्ट, उसके बाद आपको लगता है तो आप उसको कॉपी कर लेना। इससे आसान तरीके से आप टेम्परेचर एनोमली को पढ़ नहीं सकते हो। सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम फर्स्ट क्रिएटिंग माय टेबल। टेबल में थोड़ा सा सिंप्लिसिटी को मेंटेन करने के लिए लो लैटिट्यूड, हाई लैटिट्यूड, मिड लैटिट्यूड को नहीं लिख रहे, ठीक है। और टेम्परेचर एनोमली के 2 वेरिएंट्स होते हैं, तो उनको भी प्लॉट कर देते हैं। अब हम इनके बारे में लिख रहे हैं, आप ध्यान से देखते जाओ, उसके बाद कॉपी करना हो तो कर लेना। सो आई एम प्लॉटिंग टेम्परेचर एनोमली है। एक को बोलते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर एनोमली, एक को बोलते हैं नेगेटिव। पॉजिटिव क्या होगा? मोर देन नॉर्मल, और नेगेटिव क्या होगा? लेस देन नॉर्मल। और यहां हम प्लॉट करेंगे लैटिट्यूड। तो मेरा लो लैटिट्यूड हमने 0 से 45 डिग्रीज ले लिया, तो हाफ वे ले लिया नॉर्दर्न साउथ। और हाई लैटिट्यूड हमने ले लिया 45 डिग्रीज से 90 डिग्रीज। ठीक है, सैंपलिंग भी कर लेते हैं, ध्यान से सुनते जाना। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। तो मेरे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर में लो लैटिट्यूड पर हमने सेलेक्ट किया है इंडिया एंड अरेबियन सी, ठीक है। और हाई लैटिट्यूड पर सेलेक्ट कर लिया है साइबेरिया, विच इज पार्ट ऑफ रशिया, एंड सी ऑफ अ कोस्ट। आई एम जस्ट राइटिंग अ कोस्ट।
अब ना मुझे जल्दी से बताना, लो लैटिट्यूड है इंडिया एंड अरेबियन सी, लो लैटिट्यूड पर क्या टेम्परेचर होना चाहिए? हाई के लिए H डालो, लो के लिए L डालो। लो लैटिट्यूड पर क्या टेम्परेचर होना चाहिए? लो लैटिट्यूड पर क्या टेम्परेचर होना चाहिए? हाई होना चाहिए, वेरी गुड। तो लो लैटिट्यूड इज हाई टेम्परेचर, तो नॉर्मल मतलब हाई होना चाहिए। लैंड पर कौन सा टेम्परेचर होगा? लैंड पर नॉर्मल से और ज्यादा हाई होगा कि लैंड पर कम होगा? लैंड पर और हाई होगा ना, बिकॉज लैंड शोज एक्सट्रीम। तो ध्यान से देखना, लो लैटिट्यूड में पॉजिटिव टेम्परेचर एनोमली विल बी ओवर लैंड। हम कलर चेंज कर देते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर एनोमली विल बी ओवर लैंड। हमारा सैंपल क्या है? इंडिया। नेबरिंग वाटर है अरेबियन सी, वाटर ट्रांसल्यूसेंट है, मोबाइल है, उसका स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, तो लैंड हो जाएगा सुपर हॉट। और अरेबियन सी क्या होगा? कंपैरेटिवली कोल्डर। कम ऑन, गिव मी कॉन्फिडेंट, गो अहेड, है ना? तो इसका मतलब नेगेटिव टेम्परेचर एनोमली किस पर होना चाहिए? वाटर पर। और हमारा सैंपल वाटर क्या है? अरेबियन सी। बात समझ में आई? ये आपका टेम्परेचर एनोमली मेड इजी है, इसके बाद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देंगे। अब हाई लैटिट्यूड पर आते हैं, जल्दी बताओ, हाई लैटिट्यूड में टेम्परेचर, हैंड रेस करते जाना बच्चों। हाई लैटिट्यूड में टेम्परेचर होता है बहुत कम, तो लैंड तो हो जाएगा सुपर फ्रोजन। यस और नो? लैंड तो हमेशा एक्सट्रीम शो करता है ना, हैंड रेस करो अगर कन्विंस्ड हो तो। कन्विंस्ड है, तो इसका मतलब नेगेटिव टेम्परेचर एनोमली तो होगा लैंड पर। हमारा सिलेक्टेड लैंड क्या है? साइबेरिया। और जो नेबरिंग वाटर है वो लैंड से वार्मर होगा। क्यों? क्योंकि वाटर तो हमेशा टेम्परेचर को मेंटेन करता है, वो तो एक्सट्रीम शो करता नहीं। तो मेरा जो वाटर है वो कंपैरेटिवली वार्मर है, इसलिए वो इधर आ जाएगा। और हमारा एग्जांपल है सी ऑफ कोस्ट, तो हमने इसको दोबारा से लिख दिया है। आर यू कंफर्टेबल? एनोमली का जनरल पैटर्न हमारे सामने आ गया, पर काश की चीज इतनी आसान होती। पहले आप बताओ ये आसान समझ में आया कि नहीं? आ गया ना? इससे ज्यादा आसानी से नहीं पढ़ सकते टेम्परेचर एनोमली, टेक माय वर्ड, कोई नहीं पढ़ा सकता इससे आसान। अब क्या करना है? सिर्फ एक काम और कर देना है। व्हेन आई टॉक अबाउट दिस जनरल पैटर्न, व्हाई दिस जनरल पैटर्न इज नॉट रियल? व्हाट इज द रीजन दिस जनरल पैटर्न इज नॉट रियल? इट इज नॉट रियल बिकॉज इट इज नॉट कंसिडरिंग सीजन साइकिल। तो सीजन साइकिल को कंसिडर करने के लिए फिर से एक छोटा सा ग्लोब बना देते हैं, और इस ग्लोब को बनाकर इस ग्लोब में कुछ एक डिफरेंट फैक्टर को अप्लाई करते हैं। ठीक है, नोटिस करना बहुत ध्यान से। ये जो हमने बेल्ट बनाया है, ये 10 डिग्रीज नॉर्थ से 10 डिग्रीज साउथ है, इसको हम इक्वेटोरियल क्लाइमेट बोलते हैं। ठीक है, मतलब टॉरिड जोन में से हमने एक पीस बाहर निकाल लिया, और बिल्कुल वैसे ही आप क्या करोगे, फ्रिजिड जोन में से भी आप एक एक पीस बाहर निकाल लोगे। कौन सा पीस निकालोगे? 80 डिग्रीज से 90 डिग्रीज नॉर्थ, और 80 डिग्रीज से 90 डिग्रीज साउथ। ठीक है, इन दोनों को हमने शेड कर दिया, और क्या कह रहे हैं? आर द रीजन्स दैट डू नॉट एक्सपीरियंस सीजन साइकिल। समझ में आया कि नहीं? इक्वेटोरियल क्लाइमेट एंड पोलर क्लाइमेट में कोई सीजन नहीं होता। नो प्राइस फॉर गेसिंग कि पोलर क्लाइमेट में सारे साल भर विंटर्स पड़ेंगी और इक्वेटोरियल क्लाइमेट में सारे साल भर समर्स पड़ेंगी। एक कॉन्फिडेंट गो अहेड दे दो। सीजन साइकिल बताया ना अभी आपको, 4 पोजीशंस ऑफ अर्थ अराउंड सन। खाली पोलर क्लाइमेट माने कौन सा क्लाइमेट हो गया? 80 से 90 डिग्री। पोलर इज डिफरेंट फ्रॉम फ्रिजिड, एंड इक्वेटोरियल इज डिफरेंट फ्रॉम टॉरिड। इक्वेटोरियल टॉरिड का एक हिस्सा है। हैंड रेस।
तो इसका मतलब 10 डिग्री से 80 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ में तो सीजन साइकिल होगा, और अगर सीजन साइकिल हुआ तो ये पैटर्न ऑफ एनोमली तो एज इट इज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ध्यान से देखो बच्चों, और बहुत ध्यान से देखो। ड्यूरिंग विंटर्स India will be negative temperature anomaly. Hand raise. विंटर का मतलब क्या होता है? लोसन सीजन ना, लोसन सीजन में टेम्परेचर कंडीशन कैसा होता है? लो। तो लैंड क्या हो जाएगा? लोएस्ट। और नेबरिंग वाटर बॉडीज में कौन सा टेम्परेचर एनोमली चलेगा? पॉजिटिव। जल्दी से हैंड रेस कर दीजिए। सीजन साइकिल आ गया ना, एनोमली में सीजन साइकिल को ऐड करना जरूरी है। तो इंडिया क्या कंसिस्टेंट पॉजिटिव टेम्परेचर एनोमली रहता है ना? इंडिया पॉजिटिव टेम्परेचर एनोमली कब बनेगा? समर्स में। समर्स में इंडिया विल बी वार्मर देन अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। विंटर्स में इंडिया विल बी कोल्डर देन अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल। कॉन्फिडेंट, गो अहेड, फटाफट से। और आज के आज ही आपने इस चीज को पढ़ना है, इसको आपने कल डिले नहीं करना है। आपका जो फिजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योग्राफी एनसीईआरटी है 11th स्टैंडर्ड का, उसमें क्लाइमेटोलॉजी का जो पहला चैप्टर है इंसोलेशन एंड टेम्परेचर, उसको आपने आज ही पढ़ना है। उसमें आपने क्या पढ़ना है, ध्यान से देखना। सीजन साइकिल को अप्लाई कर दें तो ये टेबल जो है वो कंप्लीट नहीं होता। गलत तो नहीं हो जाता बट कंप्लीट नहीं होता, because land during summers will have positive temperature anomaly and land during winters will be negative temperature anomaly, क्योंकि land हमेशा एक्सट्रीम शो करता है, वाटर उसके मुकाबले में नॉमिनल रहता है। तो लैंड को याद कर लो, नेबरिंग वाटर, अपने आप पता चल जाएगा। यहां तक तो समझ में आ गया। अब बहुत नोटिस करेंगे ध्यान से। आई जस्ट वांट टू जूम इट अप अगेन। इंडिया की रिक्वायरमेंट नहीं है, सो आई वांट टू क्लियर दिस स्पेस नाउ। एनोमली के बारे में बात कर रहे हैं तो उसी को एनलार्ज करते हैं। सो जो ये हमने बनाया है ये एनोमली का जनरल पैटर्न है, गलत बिल्कुल भी नहीं है, बट ये कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो ऑन मैप temperature anomaly is depicted by bends of isotherm at shoreline. Imaginary lines joining places with the same temperature. तो जब नेबरिंग लैंड एंड वाटर में सेम टेम्परेचर नहीं होगा तो शोरलाइन पर आइसोथर्म का बेंट होगा कि नहीं? हाँ ना बोल दो। एनोमली को हम कैसे डिपिक्ट करते हैं? बेंट ऑफ आइसोथर्म। और बेंट का नेचर क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचर ऑफ बेंट इज सीजन स्पेसिफिक, समर आइसोथर्म will bend to equator if traced from land to water.